Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is me Zaina with another video, and in today's video I'm gonna be reviewing all the products of one brand, and that one brand is Sophia Ashley. This brand is locally available in the markets and you can find it easily. That's why I'm making a video of this brand, because many of you didn't find the products easily in the local market में कुछ products होते हैं like जो branded होते हैं वो तो हर जगह मिल जाते हैं, but जो local products होते हैं कुछ products you cannot find them in the market. So that's why I have chosen that brand which you can find it easily, and this is very cheap. And second thing is they are very good in quality. So let's look at them what I have, and I'll be reviewing each product in detail, so you have to watch this full video. और मेरी अगर आवाज़ आपको ख़राब लग रही है, so I'm not feeling well, so avoid that, and let's begin with the video. So first of all you have to like, subscribe, share and comment. So let's begin with the video. So first of all we are going to start with this. I have some Sophia Ashley lip liners, and I have 6 of these. I'm going to show you. I have different tones like reds also, pinks also, orange also, nude some type of. So I have talked in detail about them in my lip liners from different brands की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनके मुकम्मल तौर पे स्वॉचेस भी दिए हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है. सो आई एम नॉट गोना वेस्टिंग टाइम इन दैट. एंड लिप प्लस आई एक्सप्रेस दिस लुक्स लाइक दिस. ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक ही का दिखाऊंगी बिकॉज़ मैंने पुरानी वीडियो में इसकी बात कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. इसका शेड यहाँ पर लिखा हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका है LP730. ठीक है, LP730 इस तरह के इनके बहुत ज़्यादा होते हैं. लेकिन द फर्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दैम इनके लिप लाइनर्स में और डिफरेंट कंपनीज़ के लिप लाइनर्स में, दैट दे आर रियली पिगमेंटेड प्लस वेरी अफोर्डेबल. So it's worth buying. So let's move on to the next product. These are 2 blushes I have from Sophia Ashley. This is the first one, glossy shading blusher. I have shown you this one in the previous video too. It's in the shade 10, and I have another Sophia Ashley blush which is in another packaging, and this is an orangish blush in the shade 08. So I have also talked about them in detail, so I'm not gonna wasting my time in explaining this. Now let's move to the new product I got. These are 2 eyelashes. ठीक है, I'm gonna show you them properly because I haven't shown you yet. I just got them recently. They contains 1 pair of lashes. They looks like this in the shade black, F18B. Sweet Dolly Sophia Ashley, and from the behind they looks like this. Okay, so this is the packaging of lashes, and these lashes are very thick. ये बहुत ज़्यादा thick हैं as you can see. So जिनकी बहुत पतली पतली lashes हैं, so this is very 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 good lashes for them. But as I have already long lashes, सो इट वॉन्ट लुक गुड ऑन मी, और वो पक्का ही पता चलेगा कि मैंने लैशेज़ ही लगाई हुई है. सो जो लोग मेरी तरह जिनकी पहले से ही लैशेज़ बढ़ी, तो आई वुड प्रेफर दैम नॉट टू यूज़ लैशेज़, और मे बी इफ़ यू लाइक वेयरिंग दैम लाइक मी, सो यू हैव टू वेयर द थिन, बहुत पतली सी जो होती ना, you can use that. So these are very good quality. I've used them, but they look over on me because I have already so much long and thick lashes. So I would suggest the people who have मतलब very thin lashes and they are not happy with that, so they must try this once, and they are pretty affordable too. And you have to buy a glue which is eyelash glue. You can take from any brand. Sophia Ashley की भी है, Sweet Touch की भी है, so you can take any of them and you can use. Okay, so now I have this Sophia Ashley का lipstick plus lip gloss. This is 12 ml product. This is in the silver packaging. Looks really fancy, and आप लोग उसकी पैकेजिंग देख लें. ठीक है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो इन माई प्रीवियस वीडियो, सो इफ़ यू हैवंट वॉच इट प्रॉपरली. आई हैव शोन द पैकेजिंग, आई हैव शोन द स्वॉच, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन वेरी मच डिटेल. Now you will be wondering why I am making this video if I have talked about everything in detail. I just noticed on my channel that I have been making very long videos, and people do not really prefer to see long videos, and if I am reviewing a thing again, so they find it like they skip it or something. So that's why I think it's not good to repeat again a review. So I can show you the packaging, and it is very good. ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है. इट्स कलर इज़ गुड, लॉन्ग लास्टिंग है, स्वॉच अच्छा है इसका. आई कैन से दिस अबाउट थिंग. ये लिपस्टिक प्लस लिप ग्लॉस है सोफिया एशले की. इस तरह की इसकी पैकेजिंग है. लुक्स रियली फैंसी, वाइट एंड पिंक,
एंड शेड नंबर नहीं लिखा, बट ऑन द बॉक्स इट्स रिटन 03. It was somewhere written, yeah, here it's written 03. सो आई हैवंट यूज़ इट नाउ. बिल्कुल ये न्यू है, जब से मैंने ख़रीदी जब से ये ऐसी रखी हुई, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया. आई जस्ट स्वॉच्ड इट, वो भी उस वाली वीडियो के लिए जो मैंने अपनी कुछ लिपस्टिक्स आप लोगों को दिखाई थी उस वाले में. ठीक है, सो आई कैन से वन थिंग दैट दिस इज़ रियली अफोर्डेबल and really good, so you can choose them. Now these two lipsticks I'm gonna tell you about them too. Okay, so they are silver packaging में हैं ये, and इस पे सोफिया एशले लिखा हुआ है, and I will show you the inner packaging. This is in red color and I have another which is in shiny pink color, so I'm gonna show you that one too. So रेड वाली तो बिल्कुल न्यू है, आई हैवंट यूज इट टिल, बट दिस वन शाइनी वन आई लिटरली लव्ड इट. इट इज़ सो गुड and it's creamy and it's very much good, so I would definitely recommend you to take this. Now let me tell you the shade. रेड का शेड है 21832. ठीक है, रेड का शेड ये है, एंड द शाइनी वन विच आई लाइक is the shade number is 06832. I don't know if the camera is focusing, but I have told you the shade, so I would suggest this, that if you want a good lipstick you can go for it, plus in affordable range. But ये as it is not matte, it is moist, so आप खाना खाएंगे तो ये छूट जाएगी. Okay, so I will be doing all the talking about every single thing, then I will tell you which thing is good and which you can buy on my recommendation. Okay, so let's come to this foundation. This foundation is by Sophia Ashley Professional Flawless Lustrous Liquid Foundation, and I'm gonna show you the shade SA621. ठीक है, the packaging looks really pretty. It has a black cap and नीचे भी black ही इस तरह की इसकी packaging है, and looks like this. Let me read how long I can use this. So this is 30 ml product and I can use it till 12 months, means 1 year, and it has a pump like this. It's being very messy, और अंदर से ये इसमें प्रोडक्ट यहाँ पर होता है. ठीक है, I can show you till this because अंदर बहुत फिर messy है. इसका रिव्यू बहुत जल्द आ रहा है. इसका रिव्यू ये तो मैंने कर दिया होगा, या मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने ये वीडियो कब डालनी है. आगे पीछे भी अक्सर वीडियो हो जाती है मुझसे, तो अगर रिव्यू आ गया होगा तो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं तो इसके रिव्यू के लिए वेट कीजिएगा. I'll be uploading a detailed video reviewing this single product. Now let's talk about product individually, that which product I'm gonna suggest you to take on my recommendations. So for the lip liners, I'm gonna say, if you want some very good liners, lip liners, and in a very affordable cheap price, so you must take them. They are 10 on 10, so you can आँखें बंद करके कहते हैं ना वैसे ले लें आप लोग. एंड सारे शेड्स जो इनके हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, so you can take them. Okay, and about the blush, I want to say that they are really pigmented. They look very good on your cheeks, so I would also recommend that. And if you talk about this gloss, so I haven't used it on my lips, as I told you before that it is new, but after the swatch I can recommend you that this was looking really pretty after the swatch. So I can also recommend you like 50-50 because I haven't used it on my lips, क्योंकि lips पे चीज़ अलग होती है और हाथ पे जब आप swatch करते हो अलग होता है. And about these silver lipsticks, I would suggest you these two, but if you like the matte ones and if you don't like कि after food आपकी जो है ना लिपस्टिक मिट जाए, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ इवेंट जहाँ जब आपको लंबे लंबे इवेंट्स में जाना होता है एंड यू डोंट वांट कि आपकी लिपस्टिक हटे, फिर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी. लेकिन अगर आप नॉर्मल वेयर मैट लिपस्टिक नहीं पसंद करते, मॉइस्ट लिपस्टिक पसंद करते, देन गो फॉर इट. दिस इज़ रियली गुड. आई हैव यूज द ग्लोई वन, नॉट द रेड वन, दैट इज़ न्यू. एंड सोफिया एशले की फाउंडेशन पर जल्द रिव्यू आ रहा है, सो यू हैव टू वेट फॉर इट, एंड आई विल टेल about this in the next video. And about the lashes, I would say that जिनकी पतली lashes, again I would repeat the same thing, that जिनकी पतली lashes and they don't like it, so they must try this once in a lifetime, because these are so thick, these are so good. So you can try these, but if you have long lashes, then don't try it, would look over. So here is my review. I have all these products from the same brand, Sophia Ashley, and I have told you which ones I like, which I don't. So thank you so much for watching, and if you want more videos like this, so you can comment down below. I'll try to make the video. So thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, share and comment. So you have to take care of yourself, and Allah Hafiz.